हमारे साथ ऑल इंडिया रैंकर स्टूडेंट्स जुड़े हैं और आइए जानते हैं उनका ज्ञान उन्हीं की जुबानी कि अगर आप लोगों को डिफाइन करने का मौका मिले क्लैट को वन सिंगल वर्ड में, तो वो क्या वन सिंगल वर्ड आप देना चाहोगे क्लैट के? माइंडसेट, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस। अपनी क्लैट की जर्नी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलतियां तो होती होंगी, तो आप लोगों से ऐसी कौन सी बिगेस्ट प्रेप मिस्टेक हुई जो शायद आपके जूनियर्स ना करें, आप उनको थोड़ा सा अवेयर करना चाहें? नमस्कार प्यारे व्यूअर्स, आज हम लोग जुड़े हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या मैं कहूँ टॉपर्स टॉक में, जहां पर हमारे साथ ऑल इंडिया रैंकर स्टूडेंट्स जुड़े हैं और आइए जानते हैं उनका ज्ञान उन्हीं की जुबानी। ओवर टू यू मैम। अब हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं एंड देन यू हैव टू आंसर। हम एक एक करके क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी पर्सपेक्टिव है, आप वो शेयर करिए। तो पहला क्वेश्चन मैम स्टार्ट करते हैं। श्योर मैम। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विद द स्टूडेंट्स इज कि अगर आप लोगों को डिफाइन करने का मौका मिले क्लैट को वन सिंगल वर्ड में, तो वो क्या वन सिंगल वर्ड आप देना चाहोगे क्लैट के लिए? माइंडसेट, माइंडसेट, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस। तो मैम मतलब ये चारों बच्चों ने जो बताया है, तो मिला जुला ये सभी चीजें बच्चों के अंदर होनी चाहिए, प्रैक्टिस, माइंडसेट, परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी। सो दीज शुड बी योर कॉर्नरस्टोन्स अगर आप अपनी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं। मैम व्हाट शुड बी द सेकंड क्वेश्चन? मैम अब इन्होंने तो क्लियर कर दिया है, अब ये बच्चे तो एनएलयू जा रहे हैं, लेकिन और भी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो ये वीडियो देख रहे होंगे। तो अब एक बार इन बच्चों से पूछ लेते हैं कि क्या टिप देंगे ये अपने यंगर जनरेशन को, जो इनके जूनियर्स होने वाले हैं, जो इनको एनएलयू में ज्वाइन करेंगे, क्या टिप रहेगी? तो स्टार्ट करते हैं। मेरी टिप यही रहेगी कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने पे यू शुड लुक इनटू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उन्हें सॉल्व करके यू हैव टू फिगर आउट योर वीकनेसेस एंड योर स्ट्रेंथ्स एंड अकॉर्डिंगली अपने वीकनेसेस पे यू नीड टू वर्क अपॉन। I believe that in the starting of your preparation हमें क्या करना चाहिए कि हमें सारे subjects को equal weightage देना चाहिए, because any section can be rank changing और वो rank दिला भी सकता है और कुछ हो भी सकता है उसमें। So equal focus देना चाहिए in all the subjects and equal focus देने से होता है कि it's a better thing and you should start early. That's my request to all the students. Well said. Another thing I'd like to add is don't let your strengths become your weaknesses, because ऐसा होता है कि हमारे कुछ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं और वीक सब्जेक्ट्स को बेटर करने के चक्कर में हमारे वो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं ना, वो भी वीक हो जाते हैं। तो हमें बैलेंस बनाकर रखना है एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड बिलीव इन योरसेल्व्स थ्रूआउट द जर्नी। My tip would be to make it a CLAT exam, not a GK exam. As both of them said, that you need to balance out the subjects. So the most common mistake I see among my peers and aspirants or juniors is that they make it a GK examination and they make a GK phobia. You need to understand that GK constitute only 22 to 25% of the examination. Do not compromise other section for that. And believe me when I say GK is manageable. As this year I got a perfect 28 out of 28 in GK. So my tip would be to just study it like any other subject. Do not disbalance your 5 subjects. Give them equal weightage and do not make it a GK examination. Make it a CLAT examination. It's your aptitude test, not your knowledge test. Well said. So my next question from the students would be कि अपनी क्लैट की जर्नी में कभी ना कुछ गलतियां तो होती होंगी, तो आप लोगों से ऐसी कौन सी बिगेस्ट प्रेप मिस्टेक हुई जो शायद आपके जूनियर्स ना करें, आप उनको थोड़ा सा अवेयर करना चाहें? It may sound a bit too small of a thing to be called a mistake, but fill your OMR correctly. I'm going to NUJS Kolkata and not going to NLSIU Bangalore is the reason, not lack of knowledge, lack of practice. The reason is wrong filling of OMR. So please take a bold note point of this thing. Do not fill your OMR wrong. मैम आई वांट टू ऐड टू दिस। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग ये है, इस आंसर की के अकॉर्डिंग मेरा ये है, लेकिन रियल स्कोर में 4 से 5 नंबर कम है। वो 4 से 5 नंबर कम OMR की वजह से हैं, क्योंकि वो स्पॉट्स अच्छे से दाखन नहीं हुए। मुझे तो लगता है ये प्रोबेबल रीजन हो सकता है। तो OMR फिलिंग इज वेरी वेरी रिक्विजिट एंड इम्पेरेटिव।
Okay. So I totally agree with my friend. As he said, I too had a phobia of OMR. Another thing I'd like to add is often people often ignore the quantitative techniques section. And that is one of the sections in which you can score like 12 out of 12 marks. GK as well, like if you know, and if you don't know, then you don't know. So these two sections must be taken care of very carefully. And for GK, I believe we must start early, because as your preparations keep on going, and you're ignoring GK constantly. So what happens is that a lot of backlog gets created, and that often feels very cumbersome at times, and often people get panicked because of that. So don't let that happen. Keep on doing your GK consistently throughout your preparation. That would help a lot. I feel like my biggest mistake was also starting too late with my current affairs. मैंने जून में सारे पूरे साल के नोट्स बनाना स्टार्ट किए थे. आई फील लाइक इफ़ आई हैड स्टार्टेड इन जनवरी, सी एन जी के इतना ओवरवेलमिंग नहीं रहना था मेरे लिए. बट सिंस आई स्टार्टेड वे लेट इन लाइक जून एंड जुलाई, मेरे को पिछले साल के मतलब उस साल के पिछले महीनों के नोट्स भी वहीं से स्टार्ट करने पड़े थे. एंड इट वाज हार्ड टू रिकॉल ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैड हैपेंड. तो माई एडवाइस वुड ऑल्सो बी टू स्टार्ट जी के वेरी अर्ली, जनवरी या फिर पिछले साल के दिसंबर में. इफ़ यू स्टार्ट, इट्स गोना बी गुड फॉर यू. So like what I faced in my preparation was that sometimes there used to be days when I used to put my greater impetus towards one subject. So I believe one should not actually, like, it happens, like if you're feeling that you're going down in one subject, then probably to recover marks in that subject or in that sectional test, you actually divert all your attention towards that subject. So somewhere or the other, it actually impacts your other sections, because you're not like giving equal time to those subjects. So my humble request to my juniors and the people watching this video would be that you should divide your time slot in a day, wherein you can actually put focus towards all the subjects that are there in the paper. And rightly pointed out that GK is very important, and for that you should start from day one itself, like from the January month or February. Very well said. Any other question that you would like to put up? Can I take a pause? I don't remember. क्या था? Biggest challenge and ideal hours of study. ठीक है. Yes मैम, एक और बहुत क्वेश्चन. यस मैम, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है. मैम, जब हम डिस्कस करते हैं, बच्चे बताते हैं मेरे को ये सेक्शन ज़्यादा चैलेंजिंग लगा. मेरे लिए सेक्शन नहीं, PYQ एनालिसिस बहुत चैलेंजिंग है. मेरे से डाइवर्सिफाइड रीडिंग नहीं हो रही है. तो मैम, अब हम बच्चों से पूछ लेते हैं कि आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा है अपनी प्रिपरेशन में. सो लेट्स स्टार्ट. जब मैंने अपने इसके क्लैट प्रिप की जर्नी में PYQ सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, आई फाउंड आउट आई वाज रियली वीक इन लॉजिकल सेक्शन. तो यही पूरे साल यही मेरा जो सेक्शन था वो मेरा बिगेस्ट चैलेंज रहा था. बट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ इट बिकेम केक वॉक. इवेंचुअली मैंने GMAT क्लब एंड बाकी सोर्सेज से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए. PW का क्वेश्चन बैंक और वो प्रो लर्निंग वाला क्वेश्चन बैंक भी काफ़ी हेल्पफुल था इस जर्नी में, एंड दैट हेल्प मी मेक माई लॉजिकल सेक्शन स्ट्रॉन्गर. So I totally agree with what my friend said. I believe logical is one of the major concerns that all the aspirants face during their preparation, and we have also faced the same thing. So I believe consistent practice in that subject domain is very, very crucial, and analyzing your previous year paper is I believe it's one of the most important thing. So like if you're not doing those question papers, probably you're missing out on the idea how to attempt the paper and how the examiner wants you to answer the question paper. So if you're doing that, probably you are doing like 70% of your work at that point of time. So the 30% is your classes, DPPs and everything. So analyzing the previous year and doing the mocks is also very important. Like mocks, as rightly pointed out, does make a large chunk of your preparation during the CLAT journey. Because for this examination, the practice you do on a daily basis does define you, the way you are going to put up yourself on the final day of examination.
So doing mocks and analyzing those are the biggest thing, and then revising your mistakes, because a lot of people, what they do is that they analyze it, and after some time they just forget that even that they have done some papers and they have gone through it. So it's best to like do your previous year, then mocks, and then analyzing it. So if all the three things are done in sync, then probably you are ready for the paper. Next. Okay, so a major concern that I faced was, as I said earlier, GK, because I started very late. Like, I had a total of like 4 months of preparations. So what happened with me was that I had to complete 12 months of GK in just those 4 months. So as I said earlier, GK must be done consistently, because in the end it would seem hell of a burden on you. So that causes a lot of distress. And I totally agree, as my friend said, and analyzing your mistakes is very important. I too had this issue. Like, I used to solve my mocks and I saw my mistakes, but I wasn't able to analyze them very well and take out the gist of all my mistakes. So I faced this problem a lot. So I would suggest that please continue doing your GK along with other subjects as well, and try to analyze your mistakes as well as you can, because we learn from our mistakes only. So learning from your mistakes gives you a permanent solution to the problems. Everyone faces different section as their respective challenges, but one common challenge that every CLAT aspirant do face is the fluctuation of mock scores. So one tip from my side to handle this challenge would be to do not track your mock score. Track those, but do not worry about your individual mock score separately. For example, if you ever have seen the Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange, dot stock market, if every hour you will keep tracking that, it will keep fluctuating and you will keep getting tensed. It is going up, it is going down, it is going up, and it is going down. So the more you will worry about that, the more it will impact your preparation. So right way is to combine your mock score of average 5 to 6 mock scores and then track it, and eventually you will see it like stock market only. When you track it in short term, it keeps fluctuating, but over a period of time you will see ki the growth is happening slowly and gradually. So keep this in mind. परफेक्ट एनालॉजी गिवन. तो मतलब जैसे स्टॉक्स में भी प्रॉफिट हो जाएगा, फिर उसके बाद मॉक स्कोर्स में भी प्रॉफिट होगा. वेरी नाइस. माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि सबसे ज्यादा इजी सेक्शन कौन सा लगता था पांचों सेक्शन में से? For me, I found it to be GK and a bit of legal reasoning. For me, the easiest section used to be English section, because I have a lot of reading habits. So that used to be not a bit of a task for me. I used to read, and my comprehension skills were fine, and they just needed a little bit of polishing. So English section was the easiest for me, and maths as well. Maths was fine for me. For me, English was the easiest as well. Since a very young age, I was into reading a lot of books. I had adequate reading and comprehension skills. That made the English section a cakewalk. Yeah. For me personally, I believe it was legal reasoning, because I've been with the physics wala team for a long time, and all my teachers have been so supportive, and the classes were so enriching that I believe it was a very big booster for me. And one thing I would like to mention here is that I was a legal student in my school as well, so that was an push factor for me to even for going for it and doing better in it. So I believe that's. मैम, मेरे दिमाग में तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन घूम रहा है. बच्चे बोलते हैं 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो. एक बच्चे ने तो बोला मैम मैं 16 आवर्स पढ़ रहा हूँ. तो मैम आइडियल आवर्स क्या होने चाहिए? 1-2 घंटा पढ़ लें या 2 घंटे सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ें? व्हाट शुड बी द आइडियल आवर्स जो आपको देने चाहिए? बिल्कुल मैम, आप लोगों ने कितने घंटे पढ़ाई की, या आपको लगता है कि शायद इतना और कर लेते तो और पुश मिल जाता? तो बताइए. I believe कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कितने आवर्स आपको पढ़ना है. That depends on how strong or how weak you are in different sections. Different sections को जितना आपकी weakness और strength पे आपको उतना टाइम allocate करना है.
पर्सनली मैंने दिन में 5 to 6 आवर्स, पूरे दिन में 5 to 6 आवर्स दिए थे क्लाट के लिए, बट आई वाजंट गोइंग टू स्कूल, सो मेरे लिए 5 to 6 आवर्स देना आसान था. बट टू द किड्स हु गो टू द स्कूल एवरी डे, उनके लिए ये 5-6 घंटे देना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट यू हैव टू मैनेज योर टाइम उसी फ्रेम में. So I believe like time distribution, as rightly pointed out, is no hard and fast rule. One can actually augment it according to their needs. So अगर जितना ज़्यादा करना है कोई subject में, so you can put more hours. But I would say keeping a balance is the best thing. Like leaving out on any topic is the biggest blunder that anyone could do. So I believe सारे subjects पे focus करना, and कोई optimal time limit नहीं है कि मतलब 8 घंटा पढ़ लिया that's more than enough, or 6 hours. Whatever suits you the best, and जिसमें you are the most effective and most efficient. Like you should put in your 8 hours, and that 8 hours should be golden for you. It shouldn't be like I'm putting my 8 hours, but I believe I have done work only for 6 hours. It should be for 8, should be 8. 10 for 10, and that's how it works. Totally agree with my peers. They have almost everything. The thing is that time distribution depends from person to person. It depends on the total amount of months you're practicing, and also your abilities in certain subjects. So as my friend said, you must divide the subjects, the hours you put in each subject according to your own needs. For example, if your legal reasoning is weak, you can put a bit more time into it, and a little bit less time in English or logical or something. So it depends from person to person. You must be the person who has to identify your strengths and weaknesses, and cater your time according to that. Talking about personally me, I have never studied according to time. For me, it has been always simple कि I study according to my tasks. Supposedly, I decided that today I have to study a Middle East crisis or schedule in GK, assumption in critical, and time, speed, and distance in quants. So I do not track time. I just see कि whenever my task get completed. Someday it may take 3 hours, someday it may take 13 hours. That doesn't create any difference. So just study according to your task. That would be more productive, and you will be a little bit less tense. So track your task, not your time. आई थिंक ऑन एन एवरेज सभी बच्चे टॉपर्स यही कहना चाहते हैं कि क्वालिटी दो जब टाइम डिवोट कर रहे हो, चाहे 2 घंटा दो, चाहे 4, चाहे 13 घंटे, जितना पढ़ रहे हो उसमें अपना 100% दे जाओ. अपने सारे एफर्ट्स आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देंगे. तो यहीं पर हम इस सेशन को आज यहीं पर एंड करना चाहेंगे. तो ये थे आपके कुछ पर्ल्स ऑफ विजडम, और आई वुड से कि मोती जो इन बच्चों ने आपके साथ शेयर करे हैं, इनको अप्लाई कीजिए और हो सकता है अगले टॉपर आप हो.